अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजौरी कदल के गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम से आपका खैर मकदम। 12वें मैच की दूसरी पारी, पहली गेंद शॉट ऑफ फ्लैंक पुल किया और गेंद फाइनल की जानिब गई। हालांकि फील्डर वहां मौजूद और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुतीब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। उनके साथ हैं इमरान गेल और मीर फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं बाबा निसार कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Irfan. Thank you for introducing me to the commentary box. And back we are on the platform of ANN News channel, and we're live for the chase of Zoonimar Cricket Club. They're chasing 203, a mammoth score they're running after, and two batters, Imran Ghani and Muteeb, out there in the middle. Run on the very first ball. Next ball, guiding it beautifully. Oh, not stopping it. To the left of that third man, and the ball just crosses the fence for 4 runs. A good start. And Imran Ghani just making sure he just uses the pace of the ball and plays the ball delicately. A fine touch and a fine results as well. 5 runs on the board, and Imran gets off the mark with that beautiful right towards the third man for 4. It's 5 for none. 2 balls bowled. गेल ने अपना खाता खोला चौके की मदद से और इस तरह से यहाँ वो 4 रन बनाकर नाबाद, जबकि 5 स्कोर 203 रन का टारगेट यकीनन आसान नहीं होगा यहाँ इस पिच पर ताकुब करना टीम ज़ूनिमर के लिए। फिलहाल नौजवान गेंदबाज मीर फैजान एक बार फिर से इस ओवर में शॉर्ट गेंद दिए, गेल बैकफुट पर गए, उन्होंने गेंद को दिफाई तरीके से खेला और देखें तो यहाँ विकेट कीपर के साथ साथ एक फ्लाई स्लिप लगाई गई है, जबकि डीप थर्ड मैन है, गली हैं और बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी हैं, जबकि उनके थोड़े से फासले पर शिराजवानी कप्तान कवर पॉइंट पर खड़े हैं और एक खिलाड़ी मिड ऑफ की पोजीशन पर आदिल 50 के तौर पर। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, जिसमें से एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर हैं, एक शॉर्ट मिड विकेट है और एक यहाँ मिड ऑन तैनात किया गया है। Oh, plays it beautifully, not getting it onto the right spot of the bat. Eventually they would have ample time to go for a single. And once again Irfan, left and right hand combination to start the chase on. यकीनन लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जिस तरह से आगाज करते हुए, हालांकि अगर देखें तो यहाँ फ्रंट 11 पुलवामा की जानिब से भी लेफ्ट एंड राइट हैंड बल्लेबाज को भेजा गया था इब्तिदा करने के लिए बल्लेबाजी के हवाले से, और उसी रवायत को बरकरार रखते हुए टीम ज़ूनिमर क्रिकेट क्लब हम इस दौरान फैजान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंड मुतीब के लिए। Wow, that's a wonderful line. Oh, decision comes from the umpire. That's a wide. Got a no ball as well in this very over and a wide as well. So 2 extras, and you can't keep extras out of this very venue and out of this very league, J&K Qualifiers league. Many extras, and so far the very first over when you find 2 extras on the board. यकीन इस ओवर में नो बॉल भी आए हैं और इस तरह से 8 स्कोर ज़ूनिमर का और एक अच्छा स्टार्ट मैं समझता हूँ। यहाँ 3 गेंदों में 8 रन बने और 3 गेंदें बाकी हैं। शॉर्ट ऑफ फ्लैंक डिलीवरी, पुल करने की कोशिश, हुक करने की कोशिश, लेकिन वाइड का इशारा एक बार फिर से। Once again a wide. The height is the problem. You know, leg umpire just pretending it and just signaling to the striking umpire, and it's 1 for the over as well. So 2 back-to-back wides and 3rd extra of the over, and we believe it's a good start if you are chasing 203. Irfan, 9 for none. Left and right hand combination out here in the middle, likes of Muteeb and Imran. Beautiful stuff, beautiful platform, beautiful going, and if you are chasing 203 on the board, you definitely need to get a good start. Let's see these two provide them a massive start. That's the need of the hour for them, except you have no chances to get going on. इस ओवर की अगली गेंद और मुतीब अगली गेंद को कट करते हुए खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद शॉर्ट मिड ऑफ की पोजीशन पर, कोई रन नहीं। और इस तरह से यहाँ अगर एक्स्ट्रास को छोड़कर बात करें तो ऑल इन ऑल अब तक अच्छा ओवर साबित हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रास ने हेल्प की है यहाँ रन को एक्सेलरेट करने में। Yes, you got it pretty right. If we talk about extras in any format, they would never love to just bowl extra lines, extra bowls. But here Fazan has surely bowled 1 no ball, 2 wides. He has gone for a boundary as well, for 2 singles as well. Eventually we believe that this is going to be a good start for Zoonimar Cricket Club.
Next ball, very dangerous ball. Pacey one, short of length as well. ज़्यादातर इस ओवर में शॉर्ट गेंदें देखने को मिली हैं और खासी अंदाज से अगर देखा जाए पिच में आगाज से बाउंस हैं और कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों को परेशान करने की और अगरचे यहाँ शॉर्ट गेंद पर टॉप एज लगा या मिस टाइम स्ट्रोक खेलने में यहाँ पर अपना जो है स्ट्रोक जो प्ले नहीं कर पाए और मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला तो कहीं ना कहीं चांस बन सकता है कैच आउट होने का. Absolutely, there may be some chances of having a top edge as well, and that's why the reason behind all this, the fast bowlers are surely hitting the deck hard. Next ball, that's the line. Oh, once again, very much wide. He's hitting the deck hard. He's trying to operate on that upstump channel, but the problem with Faizan is just waving off, and that's why we find another extra. इंतहाई तवील ये ओवर जाता हुआ अब तक अगर देखें तो कुल मिलाकर 9 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और अगर अगले आने वाली गेंद जो है वो जायज करार पाती हैं तो तकरीबन 10 गेंदों का ये ओवर साबित होगा और कुल मिलाकर 2 ओवर्स का वक्त सर्व किया है पहले ओवर की गेंदबाज ने यहाँ पर मीर फैजान नौजवान हैं लेकिन लाइन और लेंथ से इस वक्त बटके हुए गेंदबाजी कर रहे हैं. I believe captain must have a word with him. This is a good comeback. And talking about Faizan, he's just around 18 years old, who hails from district Pulwama. The way he just hits the deck hard, just brings that and generates a pace out of the deck, has surely got a promising start ahead, a promising future ahead. Well, 10 रन आए पहले ओवर से और जूनिमर का स्कोर 10 बगैर किसी नुकसान के और यहां से भी 193 रन दूर अपने पहाड़ जैसे हदफ से. Adil 50. It's gonna start the second over of the chase. Talking about the field on the upside, a slips in place, a gully, a backward point and a point. Oh, keeping low and a delicate touch. That is a very delicate touch and a low bounce is helping the batsman Imran Ghani on that moment and just flicking it for 4 runs. Well, अगर फाइन लेग से लेकर डीप मिड विकेट तक की बात करें तो खासा तेज आउटफील्ड है और जो ही गेंद सर्कल से बाहर जाते हैं चैलेंज रहता है फील्डर के लिए गेंद को फील्ड करना. उसी चीज का फायदा उठाया यहाँ इमरान गेल ने और गेल अपने 2 चौकों की मदद से 2 बाउंड्रीज की मदद से पहुंचे 9 पर जबकि 14 स्कोर है जोनीमर का और यकीनन अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है यहाँ पावर प्ले के 6 ओवर्स में मुझे लगता है कि मैच में बनी रहेगी टीम जोनीमर. Indeed, and let's if we talk about Zoonimar Cricket Club, the team members were hoping that Imran Gill will definitely love to come up with an all-round performance. He bowled well, chipped in with 3 wickets. Now he comes off to start the innings as well, and has hit 2 boundaries to his name. He's batting on 9 of 5. And if you are chasing around 203 on the board, definitely you will love to have Imran Ghani with such runs under his belt as well. गेल इंतहाई ऊंचे कद के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद को पुश किया पॉइंट की जानिब. किसी रन का इजाफा नहीं और यहाँ अच्छा कमबैक किया है बाउंड्री के बाद. गेंदबाज ने 2 डॉट गेंदे आए हैं और स्कोर अभी भी 14 पर कायम है और आस्किंग रेट की अगर बात करें इट्स 10.22 per over. Still under control. They're going at 9.3 runs per over. It should not be problems for the likes of Zoonimar Cricket Club. All they need to do is just keep wickets in hand, just go on with the scoreboard ticking. Next ball, beauty of a line, peach of a ball. He was trying to stand tall in the crease and just giving it a guide and eventually not getting it there. Ball goes straight to the keeper, Mehran Pandit, who batted beautifully in the first innings. He scored 47. Eventually a bit unlucky not getting his half century. But let's see. We will surely try to have a good contest on. Zoonimar chasing 203. In goes Adil. Next ball again. Outside the off stump. He was aiming to cut it. He was aiming to give it an uppercut. Not there. It turns out to be a dot ball. And talking about Adil, he is so experienced all-rounder of Guddura Pulwama. And he batted well for his 29 runs of just 15 balls. Now bowling well. Even though gone for a boundary of his first ball, now has strongly come back. Next 4 balls have been the dot ones. Here is the last ball of his first over. That has been played straight to the gully. That's the end of the over.
2 overs done, chasing 203. It's 14 for none. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। नए ओवर के साथ मीर फैजान एक बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप में गेंद, एक फ्लाई स्लिप लगाई गई है लेकिन काफी बाहर ऑफ स्टंप से, ऐसे में यहाँ कोई रन नहीं। और इस तरह से आदिल 50 का पिछला ओवर अगर देखा जाए तो आपने उनकी बात कही थी, तो कुल मिलाकर एक पुरएतमाद, पुरएतबार और काबिल ऑलराउंडर है आदिल 50, जिसका वो बरोकार यहाँ पर इजहार करते हुए। Indeed, he caught a boundary on his very first ball, now chipped in back stronger. The next 5 balls were dots on the trot. In goes Fazan. Shot pulled and finds the boundary. Just transfers all the weight on the back foot and just pulls it. Couple of bounces down to the mid-wicket region for 4 runs. नहायत ही शानदार शॉट, ये बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल कर दिया और जानते कि वह बड़ा गैप था और जिस अंदाज से घूमे बैकफुट पर, यकीन लाजवाब और टाइमिंग इंतहाई खूबसूरत थी और गेंद पलक झपकने में ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई। दैट्स अ क्रैकिंग पुल शॉट फ्रॉम मुती। He goes on to 5 and it's 18 for naught. While the ball is taking a bit of a time to retrieve, and we find a time to just tell all the viewers who might have tuned in late. Earlier at the toss, it was Captain Ishfaq of Zoonimar who won the toss and decided to bowl first. And talking about Friends 11 Pulwama, they surely batted well in their allotted 20 overs, lost 8 wickets. काफी डेप्थ है बैटिंग में। इसके बाद शबीर अहमद, आशिक वानी, आमिर शेख, आसिफ लोम, इकबाल शाह, बासित मंजूर, कुछ ऑलराउंडर्स के साथ साथ गहरी बल्लेबाजी भी हैं और टेलेंडर्स जो है वो भी कोप अप कर सकते हैं। And talking about Amir Sheikh, the man of the match for them in their all-important first encounter over here. So we can't keep Zoonimar Cricket Club out of this contest, knowing that they have got strength, they have got a complete bench. And let's see the first wicket partnership just creating 18 on the board, still going great. It's Fazan, 14. He has conceded so far, is into his second over. Next one, beautiful ball. Just bowling into that up stump channel. But let's talk about this young man. Is surely having a pace. Is generating the pace off the deck. रहनुमाई की सख्त जरूरत है इस नौजवान गेंदबाज को और जिस अंदाज से एक्स्ट्राज पहले ओवर में उन्होंने खर्च की, तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में एक बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर वो उभरने वाले हैं, अगरचे वो किसी तजुर्बाकार खिलाड़ी की सलाह मशवरा और अगर कोई किसी मेंटर को वो हासिल करते हैं तो यकीनन एक बेहतरीन गेंदबाज साबित हो सकते हैं। जिस अंदाज का उनका बॉलिंग रनअप है, स्टांस है, गेंदबाजी का एक्शन है, he is bowling with a soft action. Indeed, he has got a pretty soft action, especially when he is about to release the ball. His chest just opens a bit, and that is giving him a bit of a strength to just hit the deck quite hard. He has got surely a great future ahead, and he needs a great encouragement and a support for his experienced cricketers out there. The captain standing close to him. After every ball he's having a word with him, and that will surely adding to the boost of this young man. 20 for none. Zoonimar chasing 203. Next ball keeping low. That's a dot ball. It could come back from Mir Fazan. It's just about to bowl the last ball of his over number 2. 2.5 down. It's 20 for none. And if you look at the offside, we've got a backward point, we've got a gully a bit finer, we've got a third man who slips in place in the form of Javed, Mehran Pandit doing the job as a wicket keeper, a cover is in the form of Shirazwani. Oh, beautifully played. Is it going to carry all the way? Just waiting for the signal of the umpire.
and it's a 6. It is a wonderful shot from Muteeb. Eventually, I have a gut feeling it might be gone as a no ball as well. Talking about that shot, just watch the shot sailing all over the long on. That was a monstrous shot. Yes, it's a no ball as well, and it's going to be a free hit. Score shifts just to 27 for none, and Muteeb is having a license to kill the ball. राइट सर, यहाँ आस्किंग रन औसत जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, जबकि मौजूदा रन रेट खासा अच्छा 9.5 की औसत से रन बन रहे हैं और मीर फैजान खासे महंगे साबित हो रहे हैं, जबकि अब तक इस ओवर से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ 12 से 13 रन खर्च हुए हैं और अभी भी और ज़्यादा रन आने के तवक्को, क्योंकि फ्री हिट अब आने वाला है और मुतीब जो कि कहीं ना कहीं एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो यहाँ टारगेट कर रहे हैं मीर फैजान को। आखिरी गेंद इस ओवर की, फुटवर्क कमाल का और उड़ता हुआ शॉट कवर की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दैट इज अनदर बाउंड्री। That's a wonderful shot. All he need to do just making sure, just coming behind the line and just hitting it through the offside for 4 runs. A very expensive over comes to an end. 17 runs off this over, and finally 3 done. It's 31 for none. Zoonimar chasing 203. Muteeb 17 and Imran is batting on 9. नए ओवर के साथ बारी किनारा लगता हुआ, ओह माय गुडनेस, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद गई है। खासा तेज आउटफील्ड और शुरुआत चौके से। Absolutely, that's a wonderful start, and that is the way you would love to have a start on every over. Imran Ghani just waiting for the ball just taking the outside edge to the right of the slips, and third man just finding himself helpless to stop the ball, and that's a good shot. 35 for none. And let's talk about the start, Irfan. That is better start, and if you're chasing 203, you would love to have this kind of a start. डेफिनेटली दोनों बल्लेबाज बराबरी की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, गेल के लिए बल्ला घुमाया, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद गई है, चौका। Well, short fish line, back foot he goes, and just make sure cuts it over. A third man once again finding himself helpless. Another boundary, back-to-back boundaries, 8 of the 2 already. And Novel 50 now gets a time to rethink and rebuild his confidence. दो चौके 2 गेंदों में आए हैं अब तक गेल के बल्ले से, यकीनन इंतहाई बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुतीब की बराबरी उन्होंने की। 11 गेंदों में 11 मुतीब, 11 गेंदों में 17 मुतीब और 11 गेंदों में 17 इमरान गेल। Ball on the onside, full toss, and has been driven beautifully on the onside, and the long on fielder finding himself completely helpless. Back-to-back boundaries. It's a hat trick of 4s. बिल्कुल चौकों की हैट्रिक, यहाँ पर चौकों की झड़ी लगा दी है इमरान गेल ने। कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, ऑफ्टन की चैनल से काफी बारी गेंद थी, इस गेंद को कलाइयों के सारे टर्न करते हुए डीप काउ कॉर्नर का हदफ चुना और इनफील्ड को बीट किया, क्लियर किया और 4 रन हासिल किया। यकीनन चाहेंगे यहां से पावर प्ले के ओवर्स में तकरीबन 60 से 65 रन बनाए और कोई विकेट ना गवाए। Indeed, they're just having a great execution of the plans. Shiraz Wani into a screens who batted for 64. कुछ परेशानी में नजर आ रहे हैं शिराज वानी। Indeed, they are looking completely a bit disappointment at the moment on their faces. It can be understood. Next ball, just defensively plays it down to Wani at the covers. No chance for any runs, and always in any format of the game, if you are chasing a massive score, it's always being said you need to get a better start, and the start has been done, it has been provided,
and now rest of the batters need to capitalize and just implement their skills. यहाँ से इस ओवर में अब ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. अब अगर सिंगल से काम लेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा. अगली गेंद को कट किया लेकिन फील्डर मौजूद, तो ये बेहतर सोच है. 3 बाउंड्रीज हासिल की, डॉट गेंद खेली और बड़ी राहत के साथ एक सिंगल हासिल की. और ऑलरेडी इस ओवर से 13 रन आ चुके हैं जो कि आस्किंग रेट से कई ज्यादा भी हैं. और ऐसे में दूसरे बल्लेबाज को भी मौका दिया तो प्रेशर आसानी के साथ हैंडल कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज. And on the other side, I believe Shirazwani will not go back to Faizan Mehraj. He would definitely love to make a change, and it will be quite interesting to see that which bowler he will now use as the change number 3. In goes Adil, last ball, and oh my goodness, what a catch! What a catch! This is from Javed. For the first moment, it just pumbles and eventually just divers towards the right and gets onto the second end, and a wonderful catch has been taken. And the left-handed Mutim departs for 17 of 11, and finally Adil, he's having the loft and he has got the breakthrough for Paradise 11, Pulwama Friends 11, Pulwama. What a catch that was! What a magnificent catch! क्या शानदार कैच. और ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, बाहरी किनारा लगा और पहले गेंद ऊपर उठी और दूसरे अटेम्प्ट में डाइव लगाकर बहुत ही बेहतरीन कैच. Absolutely brilliant. Let's talk about if you would have dropped this catch, I believe he would have been killed by his captain over there. Definitely यहाँ से क्योंकि ब्रेक थ्रू की जरूरत थी टीम पुलवामा को और यकीनन एक बेहतरीन कोशिश फील्डर की. और इस तरह से दूसरे फील्डर्स में भी इस फील्डिंग से यकीनन जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाते हैं. Swashed this beautifully on the second attempt. The catch was dipping onto the ground and he just forfeited his dive. Lovely scenes. Great visuals there to a screen. Finally, Friends 11 Pulwama. Oh, what is this? Here is the half 12th man comes in. Well. Boy, you are on the screen. You are on the screen. It's not knowing that he's on the screen. बिल्कुल बच्चों को ऐसी कोई फिक्र नहीं होती है, चाहे वो स्क्रीन पर हो या ऑफ स्क्रीन हो. तो बड़ी मशगूल अंदाज में इस वक्त चल रहे हैं. बचपना है. You're missing your childhood? डेफिनेटली, कौन नहीं करेगा. So second batsman, one down batsman comes go to the middle. There is Mr. Shabir gonna join Imran Ghani. We are about to have this fifth over to start, and we see a bowling change. It's Abid. Batted well for his around 20. Is now gonna start the over number 5, replacing Mir Faizan. Was expensive score and conceded 27-2. And Imran Gale. He definitely holds the key for Zoonimar Cricket Club. गेल को यहाँ से बिल्कुल उसी अंदाज का स्टार्ट प्रोवाइड करना है टीम जोनीमर को, जिस अंदाज से क्रिस गेल वेस्ट इंडियन क्रिकेट को स्टार्ट दे देते हैं. और इस तरह से एक बड़ा टोटल है यहाँ जिसको ताकुब करना, जिसको चेज करना है. टीम जोनीमर को चाहेंगी कि यहाँ एक और जीत दर्ज करके राउंड सेकंड में बड़ी आसानी के साथ दाखिल हो जाएं. एक बार फिर से कैच की झलकियां. अगली गेंद डाउन द ग्राउंड, जोरदार शॉट, इमरान गेल, दैट्स अनदर बाउंड्री. Beautiful shot, good use of the feet, and just making sure he just hits it down the ground and hits the 4. He's not gonna lose his cool, he's not gonna lose his aggression. He will just go on with his natural aggression, and he will keep on finding the boundaries if he stays on the crease. 4th boundary, he goes on to 26 and the score shifts to 48 for 1. Ball cuts it but finds the fielder at the point region, no chance. And if Friends 11 Pulwama, if they want to see themselves back in the game, they need to take wickets, they need to take them quickly. There is Abid once again. Adil having a shy, but no, just controlled his nerves. He was not having a proper backup, that's why he just did not throw the ball on the non-striking stumps. But it could come back from Abid. Hit for a boundary on the second ball, and next 2 balls turn out to be the dot ones.
once again. Wicketkeeper Mehran just staying pretty close behind the stumps. That was in the game. Oh my goodness, the catch is dropped. Can you believe it? The catch is dropped. It was pretty simple. It should have been taken. And finally Faizan has dropped a very much sitter, I tell you. Especially it's Imran Gale. If you drop him, you can have the other side of the coin. Just watch it. Shuffles across. Not hitting it on the right part of the blade. Oh, it was very simple. It was very going gazy of him. You just drop it. And you can't afford to lose this catch. I believe. 5 done, 48 for 1. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज़, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस Captain now comes to start the proceedings. Lovely ball to start off. Here is Shirazwani once again. He bowls with those typical slow deliveries. That is in the gaps. That is in the gap. And into the fence the ball goes for 4 runs. नहायत ही उम्दा स्ट्रोकेट कवर ड्राइव शिराजवानी के खिलाफ, और इस चौके की मदद से ही 50 रन मुकम्मल हुए हैं। ज़ूनिमर के 52 है स्कोर। फ्लाइट का इस्तेमाल किया शिराज ने, डाउन द ट्रैक आए और ड्राइव किया, बड़ा शानदार ड्राइव है 4 रनों के लिए। शबीर अहमद जिन्होंने खाता खुला इस चौके की मदद से, अगली गेंद को खेल दिया पॉइंट की जानिब। सो छठा ओवर है पावर प्ले का और अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है यहाँ ज़ूनिमर की टीम। Indeed, they have exploited the power play well, just getting past 50, just losing only a wicket. And it could have been wicket number 2 on the last over, but eventually Faizan just drops that simple catch. But I believe this can prove pretty costly for them, pretty expensive for them. Dropping likes of Imran Gale, it might be pretty effective now. इस ओवर की आखिरी गेंद, फ्लाइट का एक बार फिर से इस्तेमाल, बैकफुट पर गए, गेंद को ड्राइव किया, कवर फील्ड मौजूद, 1 रन मिलेगा और ओवर की तकमील, पावर प्ले मुकम्मल, स्कोर 53, 1 विकेट के नुकसान पर। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स स्टेडियम ऑफ राजौरी कोदल गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर J&K क्वालिफायर्स लीग का 12वां मुकाबला जारी है और 7वें ओवर की इब्तिदा यहाँ आबिद की जानिब से की जा रही है। पहली गेंद अंदर की तरफ गेंद आई, हल्के हाथों से दिफा किया और 1 रन हासिल किया। स्कोर 54 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 203 रनों का ताकुब, 203 रनों का पीछा किया हो रहा है यहाँ पर टीम ज़ूनिमर की जानिब से और अब तक उन्होंने 54 रन बनाए। 1 विकेट गिरी है उनकी, 1 विकेट के नुकसान पर और 10.77 की रन औसत से अभी भी 149 रनों का सफर तय करना बाकी है, जबकि इमरान गेल इस वक्त बड़े ही उम्दा अंदाज में बल्लेबाजी करें। एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ दोनों की जानिब से देखने को मिल रहे हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेशन भी जारी है और इमरान गेल ज्यादातर यहाँ रन बनाने में तक कामयाब हुए हैं। 21 गेंदों में 28 और इस तरह से अभी भी यहाँ से 13.4 ओवर बाकी हैं।
147 रन 10.76 लगभग 11 की औसत से रन बनाने हैं। Next ball cuts it to the short point, not for the runs. You know, if we look about the last over or two, there has been a bit of a stop, a bit of a break on the flow of the runs. That's why you believe that the run rate is just touching 11. That's to be needed. Full toss, beautifully played. No need to run for the same. It was a low full toss, and Imran Gale just beautifully slogs it down to the deep square region for 4 runs. We were telling that the flow of the runs has been stopped a bit, but as we kept on saying, next ball was thrashed for 4. It's 60 for 1. Down the track you go. Oh, chance for the other shot. Oh, back in the crease. Imran was just possessed a wonderful height, a big height, and he just hits the ball as well. He is a powerful cricketer. And on the other side, if we talk about Shabir, who is looking on 6 for 7, but Imran has been the dominant so far, 32 of 24. I would love to have him on the crease for most of the time. This one scopes it beautifully. Is it going to cross all the way? Yes, no chance to run for the game. And the ball just travels over the fence for 4, and the second boundary of the over. And it's a no ball as well. It scoops it for 4. And finally, we're getting extras in abundance. Too many extras, especially in the form of no balls, Irfan. राइट, सो यहाँ अब फ्री हिट का तोहफा मिलने जा रहा है इमरान गेल को, जिसका वो सही मायनों में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड ओवर और सही गेंद, एक बार फिर से ऑन साइड यानी मोड़ने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद से ओवर की तकमील यहाँ 7वें ओवर के बाद 65 विकेट के नुकसान पर। ओवर का आगाज शिराजवानी, कैरम बॉल है शिराजवानी की, बैक ओवर गेंद को उठा दिया, 1 बाउंस ओवर द रोप, कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए आगाज शौके से। अब देखना होगा यहां अंजाम क्या होगा। Hitting the ball, it's Shabir utilizing it and hitting for 4 runs. Next ball, too close to cut. He was trying to cut it square, not getting it there. A good comeback, a dot ball to finish the second one. Next ball a bit quicker, keeping low, plays it down to the deep point region. They will go for a single. And Irfan, if we talk about the score, it's creeping, and the scoreboard is ticking as well. 70 for 1, and they find themselves on a good track over here, Zoonimar Cricket Club. अगली गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की जानिब इमरान गेल ने 1 रन के लिए, और सही मायनों में अब इमरान गेल एक मजबूत पारी खेलते हुए यहां इस मुकाबले में अगली गेंद को कट किया पॉइंट की जानिब शबीर अहमद ने। और एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान कायम हो रही है, जबकि 71 पर स्कोर पहुंचा है। आखिरी गेंद 8वें ओवर की बाकी है, यहां से 131 रन अभी भी दूर हैं टीम Zoonimar Cricket Club। Chance of a catch, and this time making no mistake, almost he dropped it, but eventually on the second attempt he gets onto it. Shirazwani, the captain, finally breaks this very much dangerous partnership, and dangerous Imran Gale goes off. He goes for 37 of 27, and Zoonimar 72 for 2 after the completion of 8.
राइट, सो काशिफ यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद उनके ओवर की यहाँ फेंकने के लिए वो तैयार हो रहे हैं और नए बल्लेबाज आशिक वानी, हालांकि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और शबीर के पास स्ट्राइक रहेगी क्योंकि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरी है और ऐसे में स्कोर से दुरुस्त करने की दरख्वास्त करेंगे। आशिक वानी स्ट्राइक पर, शबीर अहमद स्ट्राइक पर और आशिक वानी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 72 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग में जरा सी तब्दीली, बैकवर्ड स्क्वायर को डीप स्क्वायर की पोजीशन पर तैनात किया गया है। बैकवर्ड पर पुल कर दिया इस गेंद को, 1 रन के लिए मिड विकेट की जानिब और अब जाके जो हालांकि यहां दूसरा रन भी मिलेगा। फील्डर से जरा सा फंबल और जरा सी खता हो गई वहां मिड विकेट की पोजीशन पर, जिसके नतीजे में 2 रन हासिल किए शबीर अहमद ने। मौजूदा रन रेट 9.6 का। फ्लाइट का इस्तेमाल, जोरदार अपील और उंगली फिजा में आउट यहां पर बल्लेबाज शबीर अहमद। सो एक और झटका लगा, तीसरा विकेट गिरा 74 के स्कोर पर और ज़ूनिमर की टीम गहरे मुश्किलात में। अभी भी 129 रन दूर और विकेट हासिल किए काशिफ ने अपने पहले ओवर में और इस तरह से यहां यह स्कोर जो है 74, 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल वहां हालांकि करीबी मामला था, एक बार फिर से यहां से सिंगल से दोबारा से चेक करेंगे। फ्लाइट का इस्तेमाल किया था इस गेंद में और यकीनन मिडल और लेग स्टंप पर गेंद जाकर वहां गालिबन हिट हो रही थी। यहां से अगर स्टंप्स वाजे होंगे तो ये आप देख सकते हैं कि बॉल जो है तकरीबन हिट कर रही थी मिडल और लेग स्टंप के दरमियान। आमिर नए बल्लेबाज। खासी अच्छी धूप खिली हुई है इस वक्त गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर और J&K क्वालिफायर्स लीग जारी हैं, जबकि 12वां मुकाबला इस वक्त जारी है और अभी भी 129 रन बनाने। अगली गेंद बैकवर्ड कट किया, इस गेंद को 1 रन मिलेगा और खाता खुला आमिर ने अपना, जबकि स्कोर 75, 3 विकेटों के नुकसान पर। And we have an interesting news. After Sarfraz Khan who got married out here in Kashmir in the district shopian, one more IPL star is about to get hitched. Guess what? It's Shahbaz Nadeem, and he is to be married in the district of Kulgam. Engagement done, and now, this kind of, a kind of a time that is to be surely remembered for time and time to come in the future. Indian cricketers getting married out here in Kashmir. IPL boy Shahbaz Nadeem also gonna get married, has got engaged in one of the villages out here in Kulgam, that's Kachohalan, Kulgam. Zoonimar finding themselves a bit difficult, struggling a bit, 75 for 3. Another change brought in and working for Friends 11 Pulwama. Kashif Kamar has scored a wicket. Next ball just wraps him on the pad. Still appealing, will they go for the review? I believe they will not. 9-10, 75 for 3, chasing 203.
10 ओवर की इब्तिदा शिराजवानी ने की है। ओवर की दूसरी गेंद और गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डाइव लगाकर रोकने की कोशिश लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा, लेकिन 4 रन हासिल हुए। Much needed boundary, much needed boundary. Let's talk about Amir Sheikh, the hero and the man of the match. If we talk about Zoonimar, about the first match that they played, once again he finds himself in that kind of a situation wherein he has to surely bat beautifully. Has got a boundary, is batting on 5, facing Wani. Expol just waiting for the same. Good running between the wickets. And somebody from Zoonimar has to come and play a match-winning knock. और आस्किंग रेट भी अब धीरे धीरे 12 की ओर जा रहा है और फ्लाइट का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल, लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक नीचे आदिल 50 आउट। And Shirazwani has provided another breakthrough. It's just flighting the ball and down the wicket Ashik goes, eventually finding Adil 50 at the deep mid wicket region, not going to drop those catches. And it's 4 down now with 80 on the board, and Shirazwani gets the wicket number 2. It's such a wonderful performer, and all-round performance is showing today in this very important encounter. Shirazwani surely bowled well, batted well, and he is definitely loving to come up with a magical bowling remarks, bowling figures rather. Is into his over number 3. A new batsman walks down to the middle. That is Ubath. Amir Sheikh stands on the non-striking stump. He scored 57 in the first match he played and was declared man of the match. And today, once again, he finds himself in the same side of a situation to play a master class. And Friends 11 Pulwama finding their way back in the game. And credit goes to Shirazwani for his 2 wickets quickly. 5 runs in this over so far, and a very crucial wicket. It's so bad now. Just waits. Oh, not hitting it right. And Fazan just backing him off. Fields the ball, single cruising. And we find Amir Sheikh back on the crease now, batting on 6 of 4. Bit quicker, just guiding it, but we'll find the gully fielder. That is not for the runs. So halfway done, 10 overs done. It's 81 for 4 Zoonimar. Shirazwani completes his 3 over. And he has conceded 18 and has got 2 wickets as well. It's gonna be फैशन फिएस्टा वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहां पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला। shot, oh, not carrying to the point fielder. And he brought a bit more power inside that shot. Just could have surely carried down to the deep point fielder. Eventually only a single. Just watch this. Back pretty girl just cuts it.
and not reaching to the fielder, only goes for a single. Next ball plays beautifully, bisecting the mid-off and mid-on, and that has gone only for a bounce for 4 runs. Boundaries required, and they require many of them to keep themselves alive in the game. Beautiful shot. 86 for 4, and Amir Sheikh chips on to 10 now. Once again, just deep in the crease he goes and makes sure he plays it with softer hands down to the point for 1 more run. Amir Sheikh turned out to be the man of the match in the first encounter that they played out here in the same venue. Oh, close to cut, too close to cut. Almost takes the outside edge. It's lucky that the ball just passes the edge straight to Mehran Pandit. Once again, just trying to slog the ball, not for the runs. 2 dot balls on the trot, 7 runs so far. And talking about the required run rate, that is creeping. Almost 13 now needed. And it has come down quickly. It's only 8 going at the moment. This one in there, in the gaps. But equally fielded well by the deep cover point fielder. End of over number 11, Zoonimar, 88 for 4. राइट, सो नए ओवर का आगाज किया है शिराज वानी ने। उनका ये आखिरी ओवर रहा, हालांकि 3 ओवर्स में उन्होंने 18 रन दिए, 2 विकेट हासिल की और पहली गेंद पर यहां रन्स आए। सो 2 runs scored on the very first ball. It was a bit of a fumble, but eventually saved 2 runs for his team. Fazan out there at the long off. And let's see whether Shirazwani gets a wicket in this very over. He would definitely love to finish his quota with 1 more wicket under his quota. He's got a ball to Obed. Flighted ball deep in the crease he goes. Loves to cut now for the runs. That is a dot ball. And Shirazwani has surely bowled well. Captain leading from the front. This one, that is gone. That is a massive shot from Obed. Slogging it, reaching to the pitch of the ball, and all he needed to do was to dispatch it out of the ground. And there's a wonderful shot. 6 runs. It's 96 now for 4. राइट, सो इट्स 96 और अगली गेंद फ्लैट का एक बार फिर से इस्तेमाल, एक बार फिर से गेंद को स्लॉग करने की कोशिश, लेकिन इस मतलब पैडल स्वीप और गेंद स्क्वायर की जानिब आई। फील्ड मौजूद, 1 रन इजाफे के दौर पर और इस तरह से 9 रन अब तक इस ओर से आए हैं। 97 स्कोर, 8.2 ओवर की गेंदबाजी में अभी भी 106 रन बनाने बाकी है। Has caught 2 balls left, Shirazwani. Just bisecting the gap beautifully. This time no chance for the fielder, and the ball just goes towards the fence for 4 runs. That is a good shot once again from Amir Sheikh. Just reading the pitch of the ball, knowing that it was outside the off stump, and all he needed to do was to just smash it through extra cover for 4. वेल, खासा महंगा ये ओवर अब तक साबित हुआ शिराजवानी का, चूंकि उनका आखिरी ओवर है। एक बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, बैक फुट पर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया 1 रन के लिए, और इसके साथ ही 12वां ओवर मुकम्मल। शिराजवानी का कोटा मुकम्मल, 32 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट हासिल करते हुए अपने 4 ओवर्स में 102। ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले,
तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का। Kashif Kamar. He will continue from that side screening, and on the other end Shirazwani completes his quota. 2 wickets to him, conceding 32. Next ball, beautifully played. There is a protection. Let's talk about the required run rate, Irfan. Around 13 runs needed. You play him now. It's a time for Zoonimar batsman to just give it a go and use the long handle and accelerate a bit. यहाँ से रनों की रफ्तार को एक्सेलरेट करना बहुत जरूरी है। इसी अंदाज का स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से छक्का। That is what we were discussing, and that is what we got. A beautiful shot, smashing it over mid wicket, and Obaid joins the party of sixes as well. Just watch it. Just goes away the crease, making sure, and hitting the length for 6. This time through the offside, and beautiful stop once again from that extra cover fielder, and just a single. They have gone past head run. It's 109 for the loss of 4, 110 for the loss of 4. If we look for the equation, it's 93 or 45. Still, they are in the hunt and they are in the contest if we talk about Zoonimar. डाउन द ग्राउंड, अगली गेंद को स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन के लिए, और यहाँ से अब 12.5 का रन औसत चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कैपिटलाइज कर पाने में दोनों बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको। अगली गेंद स्वॉक कर दिया, जोरदार शॉट और हवाई फायर, ये छक्का। That kept sailing, and that kept sailing all over the Skrillex region. I believe that fell on the roads, and there we find the ball back in the ground. What a gigantic 6 that was. Just watch it. Oh, slugs it beautifully. Let's watch the ball. There he goes, out of the commentary box, over the commentary box, and on the road. Once again, drives the ball on the onside. I believe this was the over they were trying to target. 2 sixes and 4 singles. They count 16 on the same. 13 done, 118 for 4. हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वाले आपकी उम्मीदों पर खरा 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Barcha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर।
जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की मीर फैजान वापस आए हैं यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद हवा में स्ट्रोक, लेकिन डीप कवर की जानिब गेंद को फील्ड किया गया। एक रन का इजाफा और फैजान, जिनके पहले 2 ओवर्स में 28 रन पड़े हैं, अब जाके दोबारा से उन्हें शिराजवानी में मौका दिया है अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए। और इस तरह से अगर वो यहां से विकेट ले पाते हैं तो मैच में कम बैक यकीनन बेहतरीन अंदाज से होगा टीम पुलवामा का। अगली गेंद और वहां Well, that is pretty lucky and that is pretty unlucky if we talk about Amir Sheikh. Rather it will be Ubaid who's gonna go run out. And ultimately Faizan just provided the breakthrough, even though it's a run out, but he just stretches his foot and it just touched it and it goes back onto the stumps. 5 done now. And that's the very unfortunate way to get out. Just watch this ball played. It was played hard. Oh, the ball just hitting the right toes. कोई भी मौका नहीं था वापस जाने का वहां पर बल्लेबाज के लिए। Watch it once again. पेड़ पर टकराने के बाद एंगल कर गई बॉल सीधे स्टंप्स पर। That is wonderful. I can say that's a great footwork from the bowler. Indeed. A great stretch, I should say. A timed his stretch. Ball just deflects onto the stumps. And Ubaid finds himself out of the crease. Shot of the crease, he goes. Fire down. And this might give a bit of a momentum to the likes of Friends 11 Pulwama to find themselves in the game, back in the game now. Definitely they are back in the game. They are back in the hunt. It's 119 for 5. 12.60 के औसत से रन्स बनाने हैं और 62 नए बल्लेबाज आए हैं जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। पहली गेंद यहां खेलते हुए ड्राइव किया और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। आमिर का एक चौका। Well, Amir is not going to lose his hope. He's not going to lose his rhythm. The moment he just finished in that last encounter, he's just continuing the same. 22 of 13. It's 1, 2, 3 for 5. And Faizan once again getting the punishment. He's bowling quick, he's bowling pace, but he's not pulling the right lengths. In he goes over the wicket. Down the leg stump. The ball is running away. It's running away down to the long leg region. Will be stopped. Wicketkeeper Mehran gives the chase, and 2 more runs. It will be led by, yes, umpire signals, and score shifts to 125 for 5. It's going to be a serious contest from here onwards, having Amir Sheikh and Basit comes as a frontline bowler for Zoonimar Cricket Club. It was screens you find Mehran Pandit, the wicketkeeper batsman of Friends 11 Pulwama, who batted well for 47 of 29 balls, some delightful strokes, and the run rate still over 12. That's to be needed. And talking about the run rate that go on, it's 9.15. Still in the game, Zoonimar. Here is Faizan.
Shot and cut beautifully. That has gone a massive, and that has gone over point for another 6. And Faizan is not going to forget today's match. Through the entire of his life, he has been surely punished for runs. एक बेहतरीन कट शॉट, ये अजीब और गरीब और अद्भुत स्ट्रोक। गेंद जो ही बल्ले पर टकराई और ट्रैवल कर गई पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार ये पंजों पर उछलता हुआ स्ट्रोक आमिर का। And Amir Sheikh, I can simply say he is remarkable. Next-ball deflected onto the onside and only a single. It's 14 done. 1-3-2 for 5. नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call फिजियो मैदान से बाहर जाते हुए और इस तरह से यहाँ ZCC ज़ूनिमर क्रिकेट क्लब और ये 71 रन दूर हैं। 6 ओवर यानी 36 गेंदों में 71 रन चाहिए। तो इस तरह से अब 15वें ओवर का आगाज, 15 ओवर की इब्तिदा करने जा रहे हैं शिराज आका आदिल 50। सो आदिल 50 के हाथ में गेंद, उनका ये तीसरा ओवर। पहली गेंद इंतजार किया और इस तरह से 132 पर स्कोर। 12.17 की अब बास्किंग रेट यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अब डेथ ओवर्स की गेंदबाजी इस ओवर के बाद शुरू होने जा रही है। बाबा निसार साहब, क्या लगता है आपको यहां से 5.5 ओवर यानी 35 गेंदें बची हैं, जबकि इस गेंद को छोड़कर 34 गेंदें ही बची हैं और 70 रन अभी बनाने 34 गेंदों में। Well, still I will go 50-50 for both the teams. You know, the way Amir Sheikh is hitting the ball well, you know, hitting the boundaries, hitting runs, hitting, you know, keeping rotation on. He will be a key player for Zoonimar Cricket Club. If he stays on the crease, I believe we have a match on. But if he goes quickly in a matter of 1 or 2 overs, Prince Sulaiman Pulwama will having the chances of getting over the line. Good ball, hitting the glove and going down to the mid wicket only for a single. That's a good over if we talk about the point of view of Prince Sulaiman Pulwama. 3 balls bowled, only 2 runs conceded. And the run rate now creeps off. It goes past 12.5 as well. And now we find Amir Sheikh back on the crease, 32 of 18. You know, Amir Sheikh, a lot depends on him. Man of the match in the previous match and now today. Oh, good stuff, chance. Not hitting the stumps directly. Another run to the team. I was telling you about Amir Sheikh. He has got a role to play and a lot depends on him, Irfan. यकीनन आमिर शेख को यहाँ पर चाहे कि वो ना सिर्फ रन्स बनाए बल्कि अपनी टीम को जीत से हमकिनार करें। और इस तरह से फ्रेंड्स 11 पुलवामा जिन्होंने आज 203 रनों का हदफ दिया बोर्ड पर,
आदिल के ओवर की गेंद डाउन द लेग साइड और गेंद को फाइन खेला, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए. Just a delicate touch down the leg stump, and it means margins of errors. You can't bowl onto the leg stump, onto the pads. That's a bad line, and it gets a better punishment from Basit. First boundary to him, 5 of 2, and it's 139 for 5. इस ओवर से 7 रन अब तक आए हैं और 139 पर है मजमूई स्कोर. अभी भी 12.39 के औसत से यहाँ से रन्स बनाने हैं. अगर देखा जाए तो यहाँ 9 से ऊपर इस वक्त मौजूदा रन रेट. एक और विकेट की तलाश टीम्स पुलवामा को. अगली गेंद स्क्वायर की जाने मोड़ते हुए 1 रन. सो ओवर की तकमील 15 ओवर के बाद स्कोर 140, 5 विकेटों के नुकसान पर. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से. आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596777133. CLC Coaching Center, Airport Road, Parepura. वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेई और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी. अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परेपुरा में पा सकते हैं मुनफरिद तरबियत. यहाँ के तलबा को पहले ही मुल्क के खास इदारों में खासी कामयाबी मिली है. आबिद नए ओवर के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. पहली गेंद स्लोवर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विकेट कीपर के ग्लास में एक डॉट गेंद. इस तरह से डॉट गेंद यहाँ पर काफी फर्क पड़ने वाला है डॉट गेंद से. Indeed, it will add to the pressure and it will surely create a bit of a problems. Our next ball also a very, very good ball. And both the balls having dot ones, adding pressure to the legs of Basit. शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करना, विकेट कीपर को आगे बुलाना, ज्यादा रफ्तार का इस्तेमाल ना करना, लाइन और लेंथ बरकरार रखना. मैं समझता हूँ यहाँ पर एक अच्छी सोच. Yes, it's a very good mind. And just wraps him on the pad. Loud appeal for LBW. Umpire Javed not interested. And man on left, he was just indicating that it was missing leg stump, or else they could have gone for a review. But coming back, first 3 balls are dot runs, and just look at the required run rate. It just crept to 14 quickly. Replay. Surely missing leg stump. 3 balls producing no runs. The run rate goes to 14 now. Required run rate. It's Abid once again over the wicket. Plays it in the gaps. Is it gonna go all the way? No. Good stop. Singly cruising. And winds Amir Sheikh back on the crease. Is batting on 33 of 19. And if we just talk about equation, Irfan, it's 62 of 26. And they have to go with 3 boundaries or over. Next ball just plays it down to the square leg. Single will cruise. And singles not gonna hurt the legs of friends 11 Pulwama. सिंगल से आस्किंग रेट जो है उसमें इजाफा हो रहा है और अभी भी यहाँ से अगर देखें तो इस ओवर में 2 ही रन बने हैं और काफ़ी मुतासर किया इस ओवर में आबिद ने. और अगर देखा जाए तो अगर वो डॉट गेंद से फिनिश कर पाएंगे तो मजीद दबाव बढ़ जाएगा. और इसी के साथ ही डॉट गेंद और 2 ही रन आए इस ओवर से.
16 ओवर के बाद 142, 5 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर कायम और 61 रन बोर्ड पर अभी भी बाकी। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। Shiraz, Akadil. The ball has gone down to the square leg region. It's a boundary. That's a boundary. A good start. And they will love to start the over with a boundary. It's 146 for 5. And is into the last over of his quota. 29 of 1 with 3.1 overs is bowled. Equation 57 of 23. And you need to have more boundaries like this in every over to get back into the game. Ahmed Sheikh. पिछला ओवर जिसमें महज 2 रन आए थे और खासा बेहतरीन और लाजवाब ओवर रहा था वो आबिद की जानिब से, और यहाँ 3.5 ओवर बाकी हैं। कुल मिलाकर 23 गेंदों में 57 रन। अब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। Next ball, that is up in there, but that's in the gaps as oh, believe it, it has gone the distance. That has gone the distance, and this is once again Ahmed Sheikh for you. You can't keep him out of the game, Irfan. And he goes quickly on to 44 of 22 with a strike rate exactly of 200. Still Zoonimar finding themselves in the game. आमिर शेख के कंधों पर बहुत ही आला जिम्मेदारी, जिसको बखूबी यहाँ पर कार लाते हुए, और अभी भी अगर देखें इस ओवर की कहानी तो बहुत ही महंगे साबित हुआ था, लेकिन अच्छा कमबैक एक डॉट गेंद के साथ 10 रन आए इस ओवर से, और आमिर शेख का ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहना मैं समझता हूँ यहाँ ज़ूनिमर के लिए खासा फायदेमंद है। He will love to hammer on the strike more often. He's closing his half century, and his intention will be definitely to just finish the game for his team. Next one again, and is in the gaps as well. This time equally stopped well by that deep cover point fielder. Shouted at by the bowler over there, and a single cruising 11 of the 4 balls, and the required run rate at the moment just goes exactly 15. 5वीं गेंद इस ओवर की आदिल 50 द्वारा प्ले एंड मिस लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और खासा यहाँ परेशान कौन टीम ज़ूनिमर का खिमा इस वक्त दिखाई दे रहा है। At your screens you are having the dugout, some enjoying the sip of tea. Once again, last ball, that is Tapash. Is it gonna carry all the way? No, yes, it has carried all the way. That's another 6 of the over, and this time this is busted for you. And guess what, 2 sixes and a boundary, 17 runs off the over. He completes his quota, 4 overs, 1 wicket and 42 runs he conceded. And we find Zoonimar back in the game. 159 for 5, 18 balls, 44 runs to get 5 wickets in hand. फैशन फिएस्टा, वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहाँ पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर, वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर।
पिछले ओवर से 17 रन आए और इस तरह से यहाँ 18वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 18 गेंदों में अभी भी 44 रन दूर हैं यहाँ टीम ज़ूनिमर, और अगर ये ओवर भी टारगेट कर पाए दोनों बल्लेबाज तो मैच काफी सनसनीखेज यहाँ से देखने को मिलेगा। Let's talk about Abid's last over. He just conceded 2 runs and he just need to bowl the same to get his team back. Paul played it beautifully to the long off, just a single, and Amir Sheikh goes on to 46 of 24, of 25 rather, and the equation now stays 43 of 17. Let's pass it now. Here goes Abid. Wraps him on the pad. Umpire not interested once again. At this moment, if you bowl a dot ball, the run rate will surely creep up. 16 it has crossed. The run rate required is 16.12. And if you bowl a dot ball at this juncture, the run rate is surely required. The run rate required is surely creep up. Next one, driven power play. Is it going to cross all the way? No, stopped there. And a good piece of running between the stumps. Directed, I believe. Definitely it's going to be a third umpire's call. We are having a review. And Tariq Sab has got a role to play, and my gut feeling at the moment comes, it's surely running short of the crease, and he has to depart. What a great throw from the deep. And if it is so, Bassett will have to depart. Another run out it will be. Just wait for the referral and wait for the decision. यहाँ से अगर एक और विकेट गिरती हैं वो काफी खतरा यहाँ टीम ज़र्सीसी ज़ूनिमर क्रिकेट क्लब के लिए। और इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो थर्ड अंपायर रिव्यू लिया गया है रनआउट को लेकर, और कुल मिलाकर पूरी तरह से सहमत नजर आ रही है टीम फ्रेंड्स 11 पुलवामा, और 160 है स्कोर। तो अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, रिव्यू पेंडिंग है रन आउट का, और रिप्ले यहाँ अब चला जाएगा। हालांकि दूसरे रन के लिए भाग रहे थे, और ऐसे में मुझे लगता है कि जब गेंद ये एंगल जो है सही अंदाज से वाज़ेह कर पाएगा तो मुझे लगता है काफी करीबी मामला है। इट्स वेरी क्लोज, और खासी स्लो मोशन में चलाना होगा यहाँ से। अभी भी बल्ला क्रीज से बाहर, अभी भी बल्ला क्रीज से बाहर। बाबा क्या लगता है आपको? टच एंड गो, यकीनन टच एंड गो, और काफी कीनली देखना होगा, काफी करीब से देखना होगा। यहाँ तो इस एंगल से विकेट कीपर सामने आ रहे हैं। फ्रंट एंगल से एक बार फिर से चेक करना पसंद करेंगे टीवी अंपायर मिस्टर तारिक अहमद। तो इस एंगल से शायद वाज़ेह हो जाए। अभी भी गेंद स्टंप पर नहीं टकराई, बल्ला हवा में है। काफी मुश्किल ये डिसीजन, काफी मुश्किल जज करना, और मुझे लगता है काफी करीबी मामला है। Definitely, it's a close decision to make. Only 2 angles available to just have the glimpses, to have the visuals. That looks a bit easier one, but let's wait. मुझे तो लगता है कि बल्लेबाज के हक में फैसला सुनाया जाएगा। Let's wait for the same. If it is so. And it's out. It's out. It's out. So आउट करार दिए गए हैं, और यकीनन टच एंड गो का मामला था। Well, it was really touch and go, and finally the decision goes. It goes against the batsman. Is run out. Number 2 run out. And Zoonimar find themselves 6 wickets gone. And now it becomes very tough for them to chase down the score.
राइट सर, यहाँ एक और विकेट गिरी है जूनिमर की, और इस विकेट से यकीनन मुझे लगता है यहाँ से अब बाकी जो बचे रन हैं उनको चेस करना खासा मुश्किल होगा। आमिर अभी भी विकेट्स पर कायम हैं और उन्होंने 46 रन बनाए हैं। 25 गेंदों का मुकाबला किया, जबकि यहाँ इस ओवर की 3 गेंदें बची हैं। खासा अच्छा ओवर अब तक साबित हुआ है। मैच 1 रन और 1 विकेट, 2 रन और 1 विकेट, और इस तरह से अब 17 की औसत से रन बनाने हैं। 42 रन अभी भी बाकी, और यहां से अब मुझे लगता है कि जीत के दरवाजे, फतह के दरवाजे वाज़ेह हैं टीम Prince 11 पुलवामा के लिए। Indeed, it does reflect the same. The doors look completely open as far as Prince 11 Pulwama confirmed and concerned. 42 of 15, 4 wickets in hand. New batsman Mr. Zubair. Axel, that has been given a smash. It's about to be caught out there at the mid wicket. Oh, no problem whatsoever for the catcher. And finally the catch has been taken. It's this number 7 that departs. And Zubair departs on a golden duck. 7 done, 161 on the board. And Prince 11 Pulwama making it easier to get the victory in the very first match of the tournament. पहली गेंद का मुकाबला कर रहे थे जुबैर अहमद और लॉफ्ट करने की कोशिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन वहां फील्ड ने कोई गलती नहीं की और इस तरह से विकेट गवाई। यहां जोनीमर ने 7वें विकेट के नुकसान पर 161 रन। एक बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक और गेंद काफी ऊंची उठी थी और फील्डर भी बड़ी खासी मजबूत पोजीशन में आ गए थे वाइडिश लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, और ऐसे में 2 विकेट लगातार 2 गेंद पर आई हैं, जबकि 18वां ओवर खासा दिलचस्प साबित होता हुआ पुलवामा के लिए। और पुलवामा का खेमा खासा खुश और दायरे की शक्ल में इस वक्त पुलवामा का खेमा मौजूद है। कमेंट्री बॉक्स में आप उर्दू में इरफान भट्ट और अंग्रेजी में बाबा निसार को सुन रहे हैं राजौरी कदल के गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम से। Out walks the captain, Mr. Iqbal. Just having a replay. Came down the track a bit, could not hit the distance, only the elevation, and an easy catch in the end. Iqbal walks out to the centre, getting ready to face Abid. Abid has got the first wicket of his quota. There's 2 balls to bowl, equation 42 or 14 now. इकबाल शाह कप्तान है टीम ZCC जोनीमर क्रिकेट क्लब के, और अभी यहाँ से 18 की औसत से 42 रन बनाने हैं। अगली गेंद इकबाल शाह के लिए, बैक पर जाकर गेंद को निकाल दिया गली की जानिब, हल्का सा मिसफील्ड, दूसरा रन के लिए दौड़ेंगे और 2 रन बासानी दौड़ते हुए मुकम्मल के दोनों बल्लेबाजों ने, और 163 स्कोर। और अब यहाँ से लगभग फतह तय है यहाँ टीम पुलवामा के लिए। Last ball. Missing. Try and miss. बेहतरीन ओवर मुकम्मल और 163 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें बाकी, 40 रन। हर ओवर में 20 रन चाहिए। And Ahmed Sheikh standing still on the crease, and he will be on the strike. 46 of 25, and let's see whether he does the job, whether he finishes the job. 40 needed of 12. well, इस ओवर में कम से कम 25 रन आने चाहिए, कम से कम 25 रन, और आखिरी ओवर के लिए अगर 15 रन बचते हैं तो मे बी मौका फराम हो जाएगा यहाँ टीम जोनीमर क्रिकेट क्लब के लिए, लेकिन शायद ही ऐसा देखने को मिलेगा 25 रन या 19वें ओवर से आए। And it's Fazan who is gonna bowl that last over of his quota. He has been gone for runs around 40.
Yes, 41 of 3. No wicket to his name. There he goes. तो क्या मौका है यहाँ पर फैजान पर वार करने का? Yes, it is definitely on the top of the ball, and Adil not gonna miss those catches, and finally Faizan gets the breakthrough, and that is what he was looking and needing to go for, and finally Amir Sheikh departs for 46. Eventually got the distance, got the elevation only, and not the distance, and he just paid the price. And this is what we see. Zoonimar Cricket Club losing them number 8 rather. And this is, I believe, now difficult for them to get back in the game. 40 of 11. And finally some relief for Faizan, getting the dangerous wicket of Amir Sheikh. 46 he goes on. वेल आदिल 50 की मैं तारीफ करना चाहूँगा जिस अंदाज से उन्होंने आज कैचिंग दिखाई है। तकरीबन उनका ये तीसरा कैच और फील्डिंग के दौरान, जबकि और विकेट 8 विकेट गिरी है 163 के स्कोर पर। और आमिर शेख जिन पर उम्मीदें थी, जो कि एक आखिरी उम्मीद की किरण थी टीम जूनिमर के लिए, वो चिराग भी बुझता हुआ यहाँ जूनिमर के लिए। और इस तरह से अब 11 गेंदें बची हैं, लेकिन 40 रन अभी भी बोर्ड पर है। आसिफ नए बल्लेबाज। And we are gonna have the next match of the day. The team from Pulwama, it's Peace Cricket Naira Pulwama, fighting out against the likes of MACC Kashmir. So viewers who are watching, just don't go away. We are having another team from district Pulwama. That is Peace Cricket Naira Pulwama, fighting out against the likes of MACC Kashmir. That's also expected to be a great contest. Peace Cricket have lost one match. Oh, Pardam! That's a beauty. That's a glorious Yorker. And Faizan will be on a hat-trick. Can he finish off with a hat-trick? And if he does, that will be a strong comeback for him, for this young man. 9 gone, 163 for 9 now. Well, यहाँ पर आसिफ बाबा जी का ठुल्लू लेकर वापस गए हैं और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए हैं। फैजान की गेंद पर अब तक खासे महंगे रहे थे फैजान, लेकिन आखिरी ओवर बहुत ही खतरनाक और हैट्रिक बॉल उनके लिए अगली गेंद रहेगी, बल्कि आखिरी विकेट, आखिरी चिराग ZCC क्रिकेट क्लब का यहाँ मैदान की जानिब। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से मैच खत्म हुआ है। Yes, they were playing only 10 batsmen over there. That's why finally it's congratulations to Prince 11 Pulwama. They won the match by 39 runs, courtesy great all-round performance by the captain Shiraz Wani. Scored 64 and he got 2 wickets as well. Just watch the replay of that last ball. That was Faizan. That's a wonderful Yorker. Just watch it. Bang on the target. Bang he was. And eventually that's a great news for Prince 11 Pulwama, starting in the league, starting with a victory. Zoonimar Cricket Club motif 17 Imran Ghani, 37 Shabir, 14 Ashik Wani out and Dak Amir Sheikh, the man who surely kept some nerves but eventually not hitting the runs. 46 Obair, 27 Basit, 14 Zubair Dak, Iqbal shot not out on 2, Asif Lawan out. And Faizan Beg was just disqualified for going on the field because he obstructed the field as he came up with a different coloured uniform. That's a great decision by the umpire as well. And if we talk about the bowling figures, Mir Faizan, a bit expensive but a good comeback, 2 wickets to his name in the last over. Shiraz Rahim, 4 overs, 42 for 1. Abid Mir, 4 overs, a good bowling figure by him. 22 runs, 1 wicket. Shiraz Wani, the captain, was surely shown all-round performance. 4 overs, 32 runs, 2 wickets. And Kashif Kama, 3 overs, 26 runs and a wicket. That's all what we have. We'll be shortly back with the presentation. Till then, you enjoy your time.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
Audio check, hello? Hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm your host, English commentator Baba Nisar. Dwells on the platform of ANN News, and we are live for the post-match presentation of match number 12. Remind you, it was a Pool D match, and finally it was a wonderful performance, all-round performance shown by Friends 11 Pulwama, led by one of the legendary players of district Pulwama, that's Shirazwani, and they got over the line beautifully and restricting the opposite team, and that is some sort of situation we love to have in the same. Two captains we have got out here, would definitely love to have a chat with him. First of all, would love to have a talk with the captain of Zoonimar Cricket Club, Mr. Iqbal, please. Iqbal Saab, tough luck. Yes. You won the toss, ball first, but could not restrict the opponents. Yeah, we could not restrict the opponents, and we got a tough luck today. It was a bad luck actually. Mr. Ubaid got out at a very crucial stage, so that was, I think, turning point for them. If we talk about the start that was provided to you, in between Amir Sheikh, who was the man of the match in the last outing, but eventually he couldn't also finish. But those two run-outs, I believe, might be a bit of a problem for you to go on the chase. Actually, I will tell you, Mr. Amir and the Mr. Ubaid
was a key player of this team, so they could not resist. Actually, we got a tough luck for Ubaid, and that was the crucial moment for us. And tough luck today and better luck for the future. Yeah, thank you. Thank you very much. Iqbal, the captain of Zoonimar Cricket Club. And now let's talk with the captain of Friends 11 Pulwama. That is Mr. Shirazwani, please. Big hands for Shiraz Saab. Shiraz Saab, जिस तरीके से आपने इस लीग का स्टार्ट किया, पहला मैच और विन आपको हासिल हुई, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, लड़कों ने अच्छा खेला। हम यही सोच के आए थे, अगर हमने पहले ही बोला था आपको, अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम चेज पे जाएंगे, लेकिन उन्होंने टॉस जीता, हमें ऑफर किया, हमने बैटिंग अच्छी तरह से बैटिंग की। मिडल में हमारे साथ जो आबिद आया, आदिल आया, उन्होंने अच्छा खेला। और अगर बात करेंगे मेहरान की, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को सेट किया, प्लेटफॉर्म को सेट किया, मेरे ख्याल से वहां से आपके लिए गेम काफी इजी हो गई, फिर आपने चिप किया 64 रन के लिए। ये तो ये कहने की बात नहीं है, मेहरान एक अच्छा खिलाड़ी है, हमारा फ्यूचर है, टीम का फ्यूचर है, उसने अच्छा प्लेटफॉर्म बना के रखा है हमने, फिर वो हमारे को जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे उनको आसानी हो गई। अगर बात करेंगे आदिल की, जिसे हम आदिल 50 के नाम से जानते हैं, मेरे ख्याल से उसने भी बेहतरीन इनिंग्स वहाँ पे की। हाँ, वो देखने लायक इनिंग थी, क्योंकि हमें जब मैं खेल रहा था तो मुझे ज्यादा नहीं खेलना पड़ा, इसकी वजह से उसने थोड़ा सपोर्ट किया मुझे। Thank you very much, and I would not let you go, because if we talk about Fashion Fiesta Man of the Match, and this will be presented by Aqib Saab, who is the editor in News. I would like to request Aqib Saab, please come to the front. He will present Fashion Fiesta Man of the Match, and it goes to the captain of Friends 11 Pulwama, Mr. Shirazwani. He scored beautifully for 64 runs and he got 2 wickets as well. Shirazwani, the captain of Friends 11, and is the man of the match as well. Just one word we would love to have him for about this man of the match. Shiraz, man of the match भी हासिल किया आपने, क्या कहेंगे इसके हवाले से? ये बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला, क्योंकि हम आउट ऑफ फॉर्म थे, आज फॉर्म में वापस आ गए तो अच्छी बात है। You believe कि जो आपका यहाँ पे लीग जा रहा है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म में वापस आना टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे एक और लीग चल रही है, उसके लिए भी अच्छी बात है कि हम फॉर्म में आ गए तो अच्छी बात है। चलिए, congratulations for our man of the match. Thank you very much. The news from the center, Shirazwani, the captain of Friends 11 Pulwama, is the man of the match. That's what we have from the post-match presentation. We'll be shortly back with the very second match, and for that you just have to take 2 minutes break. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मसाले तो बहुत हैं, पर